Good evening traders, welcome to this weekly webinar. What I am looking here is in a chart. Before I go to the webinar and start everything, I want you to please take a note that I have made an arattai. Arattai is in a very good this thing. I think around 2 people have joined, and if you can please join arattai, and channel information is here. I think I'll attach it in the this thing so that you can ask me the questions. Whatever the questions you have, you can ask me. You can really type. You can really meet me. Okay. The another one is you can contact me always. Always, I am available here. Now, why I want to show you? I want to show you something. This I told you that it is coming to 371. This is PFC. Okay. Now I will go to the PFC, Power Finance. Okay. Power Finance Corporation, and it made here. Okay. I told you from here 415 to 395, and 1 second. 371 was supposed to come, so it came to 395 and it is again bounced back. It's okay, but it was at somewhere at 412. I was trying to tell. So you can join me in the Twitter. You can see in this Bank Nifty. I told you in the Twitter 55,849 to down 54,000. It's okay. It has come. It is still making it this thing. And then I told you about 24,695. It made to 24,695 in Nifty. So these are the things you can definitely get into it, and you can get the like this one, Nifty 50. Okay. So please join. See, one of the thing I'll tell you that every day morning I'll give something. Okay. So all I'm just asking you, if you have a time, you can join. Okay. Fine. Let's go to arattai. I will go to the weekly so that to ensure that you will get in a proper this thing. Now what's happening here in the weekly outlook? Let's see. Okay. Let me take the pen. So even if it goes a slight a little bit more, it is going to come down here. Okay. But when it is coming down, you can also see there is a divergence in the indicator. I am using MACD 4 color. Same MACD in the form of histogram. There are 4 different colors. One is dark, one is light. That's all. There is nothing more in that. Okay. So here in the histogram formation, I will get a very clear picture on this. So you can see it is already, it has made a 3 of 3, it has made a 4 of 3, and it is slightly coming down on 1 hour. Would you like to sell it? The question is, should we sell? The answer is no. The answer is no. If you sell it, suppose if you sell it, say it is made an impulse, it is making a correction here, then it will make one more impulse. It can come up to here, the higher low, it can become a flag, and it can make one more move up before coming down. So these are the pattern based trading. There is no much here is the thing, I'll tell you. I will always show it here. People make I will show you what are the actual entries and exits. See, it made an impulse, then it made an A, B and C, then it will make an impulse. Break up this, you need to short sell, and this is your stop. You need to wait until this one is reached. Once when this one passes, okay, 377 passes, you put the stop at the cost. You put the stop at the cost and see whether it goes back or pulls back again. If it pulls back and comes and tag your stop, doesn't matter. Put it to break even. Suppose if it comes back here and then make this slow drop, once it starts coming slowly here, once when it come here, you start trailing the stops 1, 2, 3, 4. These are the steps. So
once when it comes here, see whether it reverses. If it reverses, it will tag your stop. That means you will book this entire profit in the futures. You get this my point? Alright, let's go to ACC. We'll see on the weekly. So I think ACC, I have told you that it's coming down. It has made a 1, 2, 3, 4 and 5. It is a triangle. We are looking for one more down move. It is a triangle. It has made a ATH all time high. Then it made a. Then it made an expanding B. Now it is making a C here. Once this completes, we are getting a divergence in this. So the momentum is slow. So once it completes, we will wait for an impulse correction before entering the next ride. You get this? Okay, fine. Next, Adani. Adani Energy, immediate. For example, immediate if you want, suppose I want to trade in FNO. Chalo, let's see. Yes, in the FNO you can trade, but yes, yeah, in the FNO you can trade. You can buy this with the stop below here. You can buy somewhere at this level, and it will, if it goes, you pick up the profits. I will go to 1 hour and wait for I will try to wait for a correction to come here. Correction 1, 2, 3 correction to come here. Then I will buy above this. Once it passes through that, then it will pass through this high also. Once this high is passed, 950, I will put my stop here at 940 something. I will wait until it makes to 1025. So I will book the profit using trailing stop. You get this point? Good. Let's go. Weekly. Weekly it has made a bullish candle outside the trend line. See, necessary is that once it breaks the trend line, we need a clear cut reversal on the outside the trend line. Many people don't understand this. Okay, fine. Next, what we have? This one, it is going up. It is going up a little bit up somewhere here. If you can hold, if you can hold, it will go and gap 2800, around about 10% margin from this to around about 2800, 2900 it will go. From there you can see what will happen. This one is Adani Green. Yes, it is heading towards, now let me take this and put this here. It is heading towards 1500. Okay, it is heading towards 1500. And on the daily, yes, on the daily you saw this. It has made a very small range candle here. The break of that you can buy, and the stop remains. This remains a stop. This is your buy. When it moves this, your stop should come here in the profit. Once when it moves up to 1300, your stop should come and follow at 1250. Once when it moves to 1400, your stop should be 1375. Once when it moves to 1450, your stop should be 1410. So that is how you are going to maintain this. In the equity, in futures you can book based on your preferences, because futures will have a lot of volatility, so you can book on based on your preferences. So this one is coming down. Adani Ports is coming down for a little bit before it goes 1265. It is coming. Alchem is ending. We are getting one more like this. Okay, so it's an impulse A, B, C. Then we may get one more up, make a flag, and then come down. Okay, then Ambuja. I do not want to comment anything wrong, but buying this will be a very, very difficult. So don't buy it. It is going up. I know it is going up because it has made already a very high peak here. So what can happen is it can go up and it can remain in the sideways, and then finally it can come below here.
then done, kaboom, it can go. So that becomes A, B and C. You get this? I'll change the color. That becomes A, B and C. If you can understand this. Okay. Apollo is going, but Apollo Hospital, it is going, there is already a weakness in the trend. You can see that. There is a weakness in the trend. And basic idea of Apollo is that it has given 50% discount of its previous bullish candle. So I am not sure it can crawl now from here. Then all of a sudden it can gap and start going up, start going towards that. Okay. You got this? Now let's go to ATGL. ATGL is going immediately for 1071. Yes, it is going, although it looks bearish. It looks a bearish weekly candle, but it is going. Okay. And it is going for 1070. If you put a money 600 rupees, it's almost you can going to double it. Atul, hold it. I told you last time, hold it. It is going up. Whatever happens, just hold this. AU, I'm not sure. This is, I was really looking this to make a move up, but this seems to be a very different pattern. Now, because of this gap, now what I see is it is not closing above the gap. So I may get, this is impulse A, B, C. I may get one more impulse down at 640. Then from there I can go to the higher levels. This is quite a impulse. So this is actually a strong trend. Okay. So you wait for that. Wait for at 640 somewhere. If you are going to short sell should be, I don't recommend a short sell right now. It is very dangerous. It can go up a little bit. It can make an expanding flag. That means it can gap up here, and from there it can reverse, or it can make a small doji before gapping down. Okay. So I don't suggest for a short sell. Wait for it. Weekly. Now it is typically what we see is we see A, B and C, but here what happened is inside this ABC there is a new low. Okay, so right now we are getting A, B and C. So this will expand basically. इसका मतलब क्या है कि आपको फिबोनाची रिलेशनशिप लेना है तो प्रीवियस लो से लेना है, प्रीवियस लो से लेना है, एंड यू आर गेटिंग अप टू, यहां तक आपको मिल रहा है 1334 तक आएगा ये, अनदर 20%. Most don't understand how to put the Fibonacci when pattern breaks the regular this thing. But will it go up? No, it won't go up. It will first come down here, इसके नीचे आएगा, then from there it will go up. So wait for this particular flag to complete, then you can buy it. Okay, right. और क्या है, कितना मिनट हो गया, 13 मिनट हो गया क्या? ओके. एक्सिस बैंक वीकली से मैंने हमेशा कहा है कि इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स. There is nothing easier than this. This is an impulse, A, B, C correction. This is you are getting an impulse. You can get one more correction here like this, time consuming before it goes. It will go to the nearby, but it won't tag. If it tags, I'm not going to buy it. ठीक है? Then we are looking for a final drop. समझ में आ रहा है? I hope you are getting it. Bajaj Auto has a issue. Yes, it has got a issue. Impulse, correction, impulse, correction, impulse. There is a one more. This is a rising flag. This is called a rising flag. From here we are getting this thing. So I will change the color now. This is impulse. This is A, B and C. This is again impulse. So this is very simple.
पीपल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड इन देयर लाइफ देन एनीबडी एल्स। आई मीन उनके जीवन में इतना कॉम्प्लिकेशन कर लेते हैं, मैंने वो इंडिकेटर लगाया, मैंने ये इंडिकेटर लगाया, कुछ नहीं, कुछ मत लगाओ, जीवन उतना बेकार नहीं है। यू कैन सी बिफोर ट्रेंड ऑलवेज एंड्स इन अ वेरी स्लो मैनर, स्लो पेस। आई विल शो यू इन 1 आवर क्या मिला आपको यहाँ पे, व्हाट यू गॉट हियर। ओके, व्हाट यू गॉट हियर इज अ वेरी स्लो पेस। ये जो स्लो पेस है इसको एक्चुअली ये भी नहीं, हम ये गलत होगा अगर हम ये कहेंगे, तो इट शुड बी लाइक दिस। तो इसको थोड़ा पुल बैक करने दो, एक कल पुल बैक करेगा, इट विल मेक अ स्मॉल पुल बैक, एक डोजी बनाएगा ऐसा 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 15 मिनट में या 1 घंटे में, देन वी कैन लुक फॉर द बाय सेटअप। ठीक है, people often make very difficult decisions in their life by losing the money. I say don't lose the money, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है ना, उनको उनके दिमाग का कोई प्रॉब्लम दिखता देता है। बालकृष्णा, I was really looking to go and break this low here, but it seems they are not breaking it. But anyway, I am not going to suggest this. जब तक ये मुझे until it gives me a पुल बैक ऐसा फ्लैग नहीं देगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फॉर द अपसाइड मूव। ठीक है, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी का सिनारियो बहुत से लोग से, इफ इट गोज अप, इफ इट गैप्स अप, दिस इज द लास्ट गैप 56,240, देन इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। ठीक है, देन इट विल बिकम ए बी एंड सी। अदरवाइज क्या होने वाला है, इम्पल्स ए बी एंड सी, देन इम्पल्स होगा। समझ में आया? ये वाला पैटर्न फिर से दिखाता हूं, 1 मिनट। ये बना इम्पल्स, ठीक है, और ये ए बी एंड सी करेक्शन, देन यू विल गेट एन इम्पल्स। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड फोरकास्टिंग है। वंस इट हिट्स द 56,240, इट इज कमिंग डाउन फॉर अ 51,000। ठीक है, अब मैं आई एम नॉट गोइंग टू जज यूर डिसीजंस, वेट करो और एक दिन। आई डोंट नो, बर्जर पेंट मुझे मालूम नहीं है। दिस पीपल आर गोइंग अप एक्चुअली। बर्जर पेंट ऊपर किस लिए जा रहा है, क्योंकि बिकॉज क्रूड इज गोइंग अप, बट आई डोंट थिंक बर्जर पेंट इज गोइंग अप। भारत फोर्स 1 2 और एक नीचे आएगा, आके ऊपर जाएगा। भारतीय एयरटेल, इट इज ऑलरेडी इन द बेरिश टर्मिनेशन। बेरिश टर्मिनेशन का मतलब है यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रेंड लाइन भी लगाना नहीं आता यार, वो लोग ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं भगवान जाने। दिस इज कॉल्ड बेरिश टर्मिनेशन। बेरिश टर्मिनेशन ट्रेंड लाइन में इजीली मालूम हो जाता है। ठीक है, ये बना इम्पल्स, ये बना करेक्शन, और ये जा रही है फिर से एक बार इम्पल्स के लिए। वंस 2002 में मीट हुआ, देन इट कैन एंटर इनटू दिस बेरिश टर्मिनेशन बोलते हैं उसे बहुत से लोग। तब तक आपको डाइवर्जेंस वगैरह सब मिलना शुरू हो जाएगा आपको डेली पे। बेलपुरी वीकली। ये जो बैंक निफ्टी वाला है, ऐसे ही वाला कुछ केस आएगा, ये भी बैंक निफ्टी वाला ही केस जैसा है। ए बी एंड सी यहाँ तक आएगा, इक्वल हाई तक, उसके बाद में नीचे आएगा ये। ठीक है, चलो अभी नीचे चलते हैं। सिप्ला, थोड़ा जो मोमेंटम वाला है वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मेरे तो पर्सनल कुछ भी नहीं है। सिप्ला देखो, ये बेरिश बनाई, बेरिश हरामी बनाई है यहाँ पे। ठीक है, पहला मैं ये निकाल देता हूँ सब कुछ, 1 मिनट। सिप्ला यहाँ पे फेल टू मूव हाई, ठीक है, और सिप्ला यहाँ पे क्या बना रही है, बेरिश हरामी बना दी उसने।
बेरिश हरामी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। कैन सिप्ला गो अप? वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। अगर ये जाता भी है तो ये बड़ा मुश्किल से, हाँ सॉरी, वेरी अनलाइकली। इट विल लाइकली टू मेक, इट इज 1 2 3 4 हो गया। अब ये नीचे कट करके इसके नीचे कट करेगा, सो इट इज़ वेरी अनलाइकली। तो इसमें आप 1 आवर में आपका सेल सेटअप जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 1 आवर का सेल सेटअप। इट इज़ अ वेरी क्लीन फ्लैग है ये, लेकिन ये फ्लैग का लो पोल जो है यहाँ पे है, तो यू कैन यूज दिस लो पोल, ये लो पोल यूज कर सकते हो। स्टॉप यहाँ रहेगा या स्टॉप यहाँ रख दो, क्लोज क्लोज ओनली। स्टॉप का मतलब क्लोज ओनली, ठीक है। यू कैन पुट लो पोल हियर, द लो पोल हियर 1509। लो पोल अगर ब्रेक होती है देन यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट इसके नीचे यहाँ तक आ रही है आपको। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू व्हाट बेस्ट आई नो, आपकी पर्सनल डिसीजन पे। डिक्सन मैंने शायद बताया लास्ट वीक, वी मेड अ टन्स ऑफ मनी। अभी छोड़ दो इसी, अभी ये थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, फिर से एक बार ड्रॉप होगा। यहाँ पे जैसे हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट होके यहाँ गैप डाउन हुआ, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन होगा, फिर बाद में गैप डाउन होगा। कंसोलिडेशन फेज में एट द मनी कॉल और स्ट्रैंगल बेचने में आपको पैसा बहुत मिलता है। स्ट्रैंगल जो होती है ऑप्शन में, वो कंसोलिडेशन फेज में, यहाँ पे हमने एट द मनी कॉल को बेचना शुरू कर दिया। वी स्टार्टेड कलेक्टिंग एट द मनी कॉल, हमने आउट ऑफ द मनी कॉल बाई किया, एट द मनी कॉल सेल किया, ठीक है। क्रेडिट स्प्रेड ले लिया हमने, यहाँ अच्छा खासा पैसा बनाया हमने। वी मेड अ टन्स ऑफ मनी, पीपल बाय इट एंड वी आर सेलिंग इट, दैट्स ऑल। आई डोंट नो अबाउट दिस। डीएलएफ ऊपर जाना चाहिए बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। डॉक्टर रेड्डी ये भी नीचे आने वाली है ये। इफ आई शो यू सिप्ला, सिप्ला का पैटर्न भी ऐसे ही है, आया 1 2 3 4। अब सिप्ला भी नीचे आने वाली है, डॉक्टर रेड्डी भी नीचे आने वाली है। दे आर आइडेंटिकल पैटर्न्स, समझ में आ रहा? दे आर व्हाट? आइडेंटिकल पैटर्न्स। डॉक्टर रेड्डी वेट करो, डॉक्टर रेड्डी को वेट करो। इट लुक्स लाइक इट इज मेकिंग ए फ्लैग हियर, इट कैन स्टार्ट अप एंड गो अप हियर, समवेयर हियर इट कैन गैप अप आल्सो 1270। उसके बाद विल सी, ठीक है, वी विल सी ऑन दैट पार्ट। लेट्स गो। हाँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। विल यू पुट द ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर और विल यू पुट द ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर? विच वन इज करेक्ट? इज दिस पुटिंग अ ट्रेंड लाइन इज करेक्ट? आपको पता नहीं है, आपका सप्लाई एंड डिमांड वाला सिस्टम में कुछ भी नहीं बताते। दैट इज द रीजन यू नीड अ प्रॉपर एजुकेशन, यू डोंट नीड एन एडवाइजरी चैनल कोई नहीं चाहिए, आपको एक एजुकेशन चाहिए। यू नीड एन प्रॉपर एजुकेशन। विदाउट प्रॉपर एजुकेशन यू विल बी ग्लूड टू बैड ट्रेड्स, ठीक है। इट्स गोइंग टू कम हियर, यहाँ पे एक और एक फ्लैग बना रहा है, बाद में नीचे आएगा। दिस आर ऑल शॉर्ट ट्रेड्स, बहुत ही स्लो ट्रेड्स है। ग्लेनमार्क वी आर लुकिंग दिस, मैंने क्या बोला? इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। ग्लेनमार्क इज गोइंग अप टू हियर 2200, उसके बाद नीचे आएगा, तब ये इम्पल ए बी एंड सी। सी इट इज वेरी सिंपल। अगर मैं 1 मिनट में भी आपको दिखाऊंगा ना, आप पागल हो जाओगे। यस आई वॉज लुकिंग दिस डाउन, नहीं आया कोई बात नहीं, वेट करते। ये ग्रैनुलेस मैच्योर हो गई है, इसके ऊपर जो भी जाएगा जाने दो, ट्रेंड मैच्योर हो गई है। हैवल्स, दिस वॉज कॉम्प्लेक्स। जब ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिला, हमने बोला ये नीचे आ रही है। वेदर इट विल कम टू हियर और इट विल बाउंस फ्रॉम हियर, आई डोंट नो। अगर ये ऊपर बाउंस होके ऐसे फ्लैग देती है, वी आर बाइंग दिस फॉर दिस नेक्स्ट अप मूव, ठीक है। आगे कितना मिलेगा? 20% की मूव है आगे। HCL पता नहीं, HDFC यस, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू में डाला था, शॉर्ट सेल करके, बुक प्रॉफिट करके। ये
फ्लैग बनाया है एक छोटा सा, अब यहाँ से ये नीचे ही आएगा। ठीक है, ये भी मैंने ट्रेडिंग व्यू में डाला था भैया, ये ऊपर जा रही है करके। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये है कि ये कल गैप डाउन होके ऐसा बनाएगी, ए बी एंड सी बनाएगी पैटर्न, फिर बाद में ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी। ठीक है, अच्छा आइडिया, आई वॉज एडवोकेटिंग आइडिया कि इट विल गो अप। तो आपका नेक्स्ट टारगेट है 12.66। अगर आप होल्ड कर सकते हो देन यू आर गोइंग टू गेट अराउंड अबाउट 20 रुपीज। ठीक है, ऑलरेडी आइडिया पॉजिटिव में निकल गया है, अबाउट 200 ये है, डेली मूविंग एवरेज अबाउट 200 है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं सीधा पीएनबी में, पीएनबी छोड़ दो, निफ्टी में चलता हूँ। निफ्टी इज टोटली डैमेजिंग, टोटली डैमेजिंग। ये नीचे आके एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। देखो 1 2 3, ये ऐसे होके ऐसे आएगा, इसे आप हेड एंड शोल्डर बोलोगे। ठीक है, इट विल कम टू 23,600। उसके बाद देखेंगे निफ्टी का क्या होता है करके। ठीक है, क्या फिर से एक बार 26,000 को टैग होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। तब तक के लिए ऐसा ही है इसका। ठीक है, प्लीज विजिट, प्लीज ज्वाइन द अराटे, यू कैन स्पीक टू मी, वेरी फ्रैंकली यू कैन स्पीक टू मी। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, कोई हिचक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका सवाल है, अच्छा एक मिनट, सन्मान का कोई पूछा था ना यार, एक मिनट, सन्मान सन्मान सन्मान, एक मिनट भाई। अरे यार ये देखो, जिसने भी वो एक्चुअली जसपाल जी, जयसिल जी, आप जो पूछ रहे हो, एक मिनट भाई, ये कहाँ गया? ओके, मैंने वो कट कर दिया क्या? एक मिनट, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ये वैसे वैसे ही जा रहा है। एक बार ये लो बना दिया इसने, और यहाँ से एक मोमेंटम दे दी, फिर लो बनाई, फिर मोमेंटम दी, फिर लो बनाई। इट इज़ अ डन डील, इट इज़ डन डील। कोई भी नए आईपीओ में, दिस आईपीओ लॉन्च का नया लो बनाया है इसने, एंड ये गैप में बनाया है, तो इट इज़ अ डन डील। इट इज़ अ डन डील का मतलब है कि एक्चुअली आपको ये जो है, दिस इज़ वेव 1 है ऊपर वाला, और ये ए बी एंड सी हो गया वेव 2, एंड नाउ यू आर गेटिंग ए वेव 3। आपको 300 रुपए के ऊपर आराम से बुक कर सकते हो, आराम से बुक कर सकते हो। एक्चुअली आपको ऑल टाइम हाई का 1000 रुपए के आसपास है, तो मैं मिनिमम आपको 600 रुपए की बुकिंग करने के लिए मैं कंफर्मेशन मैं दूंगा 600 के लिए। अब 600 में बुक कर सकते हो। ठीक है, तो डरो मत। लेकिन हाँ, ये देखो, ये ऐसे होते हैं, ये मार्केट में प्रोबेबिलिटीज में थोड़े बहुत वेरिएशन आ जाते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, फंडामेंटल पे कॉन्फिडेंट रहो, तो आपको डेफिनेटली ये यील्ड मिलेगा ही मिलेगा। मुझे मेरे बात पे विश्वास करना। मैं कभी, बहुत रेयरली मैं फेल होता हूँ, मैं फेल नहीं होता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फेल होता हूँ, एंड आई एम द ओनली मैन हु एक्सेप्ट्स। मेरा फेलियर हुआ है तो ट्विटर में आप देख सकते हो, आई एम सॉरी आई वॉज रॉन्ग करके, एंड इवन ऑन द ट्रेडिंग व्यू में भी मैं वैसे ही बोलता हूँ, आई वॉज रॉन्ग। बट दिस इज अ मनी मेकिंग, व्हेन इट गैप्स अप हियर एंड इट स्टार्ट्स गोइंग, इट्स अ मनी मेकिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।